Okay, so students, we are starting 11.4 and we are discussing question number 3 of 11.4, which is telling us a picture is painted on a cardboard that is 8 centimeter long and 5 centimeter wide. So we have a painting. Let us draw a painting. और अब देखो इस पेंटिंग में आपको बोला गया है कि it is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. अब आप समझते हो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये रेक्टेंगल है ना कि स्क्वायर. सो दिस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. After this, it is telling now such that there is a margin of 1.5 centimeter along of its size. मतलब यहाँ पर कुछ मार्जिन भी है. ठीक है, दिस इज हियर द मार्जिन इंक्लूड करके दिस इज द पेंटिंग. तो यहाँ पर हमने मान लिया कि मेन इनसाइड वाला पोर्शन आपने ये ले लिया जो कि इसकी मेन पेंटिंग है. दिस ओके. नाउ दिस मार्जिन इज ऑफ 1.5 centimeter. It means this is 1.5 from here, 1.5 from here, 1.5 from here. The same way 1.5 from here. It means from all the side it's 1.5 as a margin. Now you have to find the total area of margin. You have to not take out the area inside outside. आपको चाहिए इसमें केवल ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया. So please try out. इसके लिए the formula I have already told you, area of outer rectangle minus area of inner rectangle. So ये दोनों निकालने के लिए आपको पहले इनके डायमेंशन पता होने चाहिए. बाहर के पोर्शन के तो डायमेंशन आपको पता है. अब आप पहले अंदर का निकालिए और उसके बाद माइनस करिए. I have started getting the answer from many students. I want after 2 minutes you should give the answer and then I will explain also. Okay students, now focus on the method what we will do. If you remember the same thing I taught just now in before patterns also, whenever we find out the area of such cases, you have to always find out the area of outer portion, then inner portion also, and then you have to subtract also. So for this, आपको outer portion के बारे में पहले से पता है. That is 8 into 5, which will give you 40 square centimeter. This is outer. ठीक है. अब बात करते हैं इनर वाले की. So बेटा जब आप देखोगे इनर वाला, तो इनर वाला डायमेंशन तो हमको पता ही नहीं है. So first we will take out the area of inner portion. डायमेंशन निकालते हैं पहले. This is 8. 1.5 यहाँ से 1.5 यहाँ से, मतलब 1.5 होता है 1.5. तो 1.5 मिलाकर हो जाता है 3. ठीक है. So 8 में से 3 जब आप माइनस करोगे you will have 5. So ये मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर डायमेंशन. उसके बाद आप बात करते हो ये वाले पोर्शन की. सो दिस इज 5. ये बाहर दिया हुआ है 5, तो हमको 5 से चाहिए अंदर वाला. तो 5 में से 1.5 यहाँ से निकाला, 1.5 यहाँ से निकाला. इट मींस यू आर सब्ट्रैक्टिंग अगेन 3. सो 5 माइनस 3 होता है बेटा 2. ठीक है. तो अब हमको मिल गया ये 2 सेंटीमीटर. इट मींस इनर पोर्शन यू हैव गॉट एज 5 into 2 and 5 into 2 होता है 10 square centimeter. Now you want area of margin. Margin मतलब the shaded portion. So that will be area of margin is equals to 40 minus 10, which will give you 30 square centimeter. Okay. So the answer will be 30 square centimeter. This is the right answer now. How many of you were right? Can you please raise hand? I just want to see how many of you were knowing the process. Now this was the question related to question number 3. Now let's discuss another question, which is question number, let me take fifth one. Question number 5. So I want you all to please draw the figure along with me so that you can try. Question number 5.
Now question number 5 says that a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden. See, it means this time the path is inside. ठीक है, it is inside. तो सबसे पहले आप obviously square garden is there. So first of all we will be drawing square garden. अब आपका जो फिगर है बेटा वो स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए, ना कि रेक्टेंगल. So I am not using scale, but you have a scale at your home. Please use that for drawing any kind of figure which you are drawing right now. So this is square. Looking like square or not? Huh? Little bit not correct, but then too it's looking like square only. So I am taking the square now. This is a square garden which is having the side 30 meter. So सबसे पहले हमने इसकी साइड रखी 30 मीटर. अब now you are knowing it is a square. So हर जगह से ये 30 ही होगा बेटा, है ना? So this is also 30. यहाँ पर भी 30 हो गया. And this is also 30. From all around it will be 30 only. Now it is saying that there is a path which is 1 meter wide built along the border inside. Remember ये inside और outside आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर inside पार्क दिया हुआ है. So you have now, ये हमने path बना दिया और path के बाद you will be having the square inside now. Okay, this is done. Now the path is 1 meter from all around. So this is 1 meter from here, 1 meter from here, 1 meter from here, and 1 meter from here. Okay. Now the question is telling you have to find out the area of path. It means again you want the shaded portion. Same like the previous question. आपको यहाँ पे path का area चाहिए. तो पहला चीज ये हो गया. Second, the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of 40 per meter square. It means path को अगर हम निकाल दें, it means ये है garden आपका, ठीक है? This is garden. So इस garden को अगर आपको बोला जाए तो इस वाले garden को आपको क्या करना है, इसमें grass plant करनी at the cost of ₹40 per meter square. तो सबसे पहले तो आप question solve करिए, then I will be telling you. This is the last question of today. If you will see this question, you will find that you have the portion this time outside. आपको पूरा measurement दिया हुआ है बेटा. हमें inside का निकालना है पहले. तो जब आप inside देखते हो तो you will find कि path is given 1 meter. This side 1 meter. This side. So if this is 30, अंदर आ गया तो 28. ठीक है? Dimension मिल गया हमको 28. और 20 चूंकि ये स्क्वायर है तो उसकी हर साइड से डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है. If one side is 28, all the sides are 28. ठीक है? So if you will find out the area of outer portion, you will find 30 into 30. 30 into 30 means 900 square meter. ठीक है? Now inside portion means area inner. ठीक है? तो we are writing here inner portion this time. So inner portion is 28 into 28. 28 into 28, I think 784. What is coming? Just tell me in the answer chat box what is coming after multiplying 28 into 28. 784. Correct. Huh? So 784 square meter. This is right. ठीक है? It means now you have got both the side portion. Now you want area. So area of path this time. So आपके पास हो जाएगा path का area is equals to 900 minus 784. और जब आप माइनस करोगे 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1. It means 116 square meter. This is path area. नाउ इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ ली गई. क्या पूछा गया बेटा? कि अगर हम पाथ को हटा दें तो जो अंदर वाला पोर्शन है हमारा जो कि गार्डन है उसमें अगर हम प्लांटिंग करा रहे हो तो 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर अगर प्लांटिंग का खर्च आता है तो टोटल खर्च कितना आएगा?
So 1 meter, look at here, 1 meter square की cost है 40 rupees. हमारे पास total area कितना है 784. So it means total cost आ जाएगी आपके पास, total cost is equals to 784 multiplied by 40. Now इसको multiply कर लीजिए, whatever the answer will be coming, that will be the answer of costing money which you will be doing it. Okay. Okay, 31360 rupees. Okay, fine. So remember, this was all about the whole process. I'm sure you will be trying this exercise